Thank you very much. It's a great pleasure to interview you. Dr. Rajesh Mantri, a popular ophthalmologist of Parvati City. He has more than 2 decades of experience. Doctor is always active in upgrading and updating his knowledge and skills, and also his eye clinic. That is why he is very popular for using advanced techniques in eye operations. He just like his name. Rajesh means Lord of Kings. He is a Lord of his patients. I feel Dr. Rajesh, his personality can be described as per his name. R stands for he is realistic and royal in nature. A stands for very affectionate and able doctor. J, judicially he treats his patients. E, enthusiastic and energetic. Rajesh, yes, he is very sincere, simple and sophisticated. H is he is very humble and honest doctor, father and husband. डॉक्टर, Thank you. आप कौन सा भी लैंग्वेज से मुझको उत्तर दे सकते हैं? Yes. आप आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। एक्चुअली हम लोग हैं मैडम, एक विलेज से बिलोंग करते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर्स विलेज है कोला। आप परभनी जिला के? परभनी जिला कोला विलेज है। इट्स अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड माय फादर वाज अ बिजनेसमैन। ही यूज्ड टू रन अ किराना शॉप एंड सीड फर्टिलाइजर शॉप। Village is very small. Village is very small, like 4,000 population. So small business, and like that. And 20 years back, when my father met one accident, after that he stopped his business. And when I shifted here for practicing, then he came here in Parvati. So 1.5 years ago he passed. So at present now we are staying with my mother and my brother, younger brother. आपका स्कूलिंग किधर हो गया? यानी कौन सा मीडियम में हो गया? स्कूलिंग मेरा मराठी मीडियम से जिला परिषद हाई स्कूल कोला। हम भी तेलुगु मीडियम में ही जिला परिषद स्कूल में किया। 10th तक मेरा स्कूलिंग वहाँ हुआ। ओके। 89 में मेरा 10th पास आउट 89 को। फिर 11th and 12th किधर किया? 11th 12th मेरा सेलू बोल के एक सिटी है यहाँ से। वहाँ पे नूतन कॉलेज, वेरी फेमस कॉलेज, नूतन महाविद्यालय, वहाँ पे 11th और 12th हुआ। फिर ये मेडिकल को जाना ऐसा टीचर्स मोटिवेट किया और खुद को लगा था? मैडम देखो मेरा कैसा मतलब 91 का 12th है मेरा। सो इट्स अराउंड ऑलमोस्ट 34 इयर्स बैक। सो उस समय ऐसा कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा कुछ बहुत पहले से प्लान्स नहीं है। आज के बच्चों का जैसा 8-9 से ही प्लान्स हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्या करना, रिजल्ट आने के बाद सोचते हैं। ऐसा था। और वो टाइम मेडिकल, इंजीनियरिंग और सीए ये तीन क्रीम ब्रांचेस थे। और मैक्सिमम ब्राइट स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू सेलेक्ट मेडिकल, इफ नॉट देन इंजीनियरिंग। ऐसा कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है। लेकिन पिताजी ने प्लान करके उनके जो फ्रेंड्स थे उनसे बात करके वे डॉक्टर बनेंगे, अच्छा है, ये विलेज लाइफ से बेटर है, यहाँ कुछ फैसिलिटीज नहीं है, तो यू ट्राई टू मेक यू डॉक्टर। चलिए एमबीबीएस किधर किया? एमबीबीएस मेरा मैडम औरंगाबाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज से हुआ। एट दैट टाइम हमारा एक सेमी गवर्नमेंट बोल के एक सेक्शन रहता, ऐसा मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लगा था नंबर, बिकॉज ऑफ 2 marks आई लॉस्ट दैट चांस। सेमी गवर्नमेंट बोल के ऑप्शन वो टाइम रहता था। इन दैट वी हैव टू पे मिनिमल फीस एंड 30% रिजर्वेशंस वर देयर फॉर स्टूडेंट्स। लकीली मुझे उसमें मिल गया, लकीली मैं बन गया, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन। एमजीएम में बहुत पॉपुलर थे, अभी भी एमजीएम कॉलेज बहुत पॉपुलर था वो टाइम। डिसिप्लिन के बारे में? डिसिप्लिन है, अच्छा प्रोफेसर्स भी अच्छे थे। और उसका जो मतलब ओनर है बाबूराव कदम और कमल किशोर कदम, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। और वो खुद पॉलिटिशियंस और रहने से क्या है, जो डिसिप्लिन रहता है कॉलेज वो मेंटेन कर सकते हैं। मतलब स्पेशली पॉलिटिशियन करने से वो गांधीयन प्रिंसिपल्स को वो बहुत अडॉप्ट करते हैं वो फैमिली। I know recently I met Sri Kamal Kishore Kadam ji when I was bringing my daughter
अच्छा, to Parvati. इंडियन प्रिंसिपल्स तो करते हैं फॉलो, Yes, लेकिन yes. दूसरा प्रॉब्लम क्या रहता है मेडिकल कॉलेजेस में, कुछ न्यूसेंस वैल्यूज है, कुछ चीज़ें हैं, No. Especially founder members का फाउंडर में attitude, नहीं थोड़ा education का quality education के तरफ. वो अच्छा रहता है, बट बीइंग ए पॉलिटिशियन दे कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स. Yes. अदर मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्या उतना होता है नहीं. कि न्यूसेंस वैल्यूज बहुत रहते हैं, Yes. वो वहाँ पे नहीं होता है. ये कुछ स्ट्रांग रहने से, Yes. हर चीज़ का सपोर्ट रहने से वो बहुत Okay. अच्छे से Okay. मैनेज करते हैं. स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी थे क्या? हॉस्टल फैसिलिटी था, बट वी ऑप्टेड फॉर रूम्स, प्राइवेट रूम्स. वो कन्वीनियंट थे. वो कन्वीनियंट था, कुछ फ्रेंड्स के साथ रहना है. हॉस्टल में क्या है, खाना कैसा रहता है? जनरली आउट ऑफ स्टेशन एजुकेशन मीन्स स्टूडेंट्स का एवरी टाइम. आई वाज वेरी लकी. हमारा हॉस्टल्स में हमारा प्रिंसिपल ही हॉस्टल वार्डन रहते थे. वी हैड बेस्ट फूड. they do, they will go to market, whichever vegetable is cheapest, they will buy that, and whole week They don't will make think like of gobi. students have come far away from home. No, they purely they do business. Business only. So it was horrible, but we used to manage by changing every month. Change of taste is also okay for ये like. combined studies करते थे क्या आप लोग MBBS में? और self जैसा study? हम लोग क्या 4 फ्रेंड्स थे, तो 4 फ्रेंड्स में हमने एक फ्लैट लिया, सब मिलके स्टडी करते थे. और ऐसा मतलब बहुत हार्ड वर्क ऐसा नहीं था MBBS में मेरा. I was like an average student. That is, some average नहीं रहता है, but they are more keen listeners and learners. We are sincere थे हम लोग. Yeah, that is well. लेकिन जैसा कुछ intelligent students रहते हैं, they used to study very hard, like 18 hours. Even 16 I hours. also used to go to bed early. By 9 o'clock I used to go to bed, but still I topped the university. No. Keen listeners. When some students are keen listeners, when you listen to the teacher well, we don't revise so much. हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, एक प्रतिभा रहती है और एक नॉलेज रहता है. Yes. प्रतिभा जो है वो बाय बर्थ रहती है, तो आप वो प्रतिभावान स्टूडेंट में से जो थोड़ा पढ़ के भी ग्रास्प कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है वो करने के लिए. वो जनरली जो कुछ स्टूडेंट्स टीचर बताते समय सुनते नहीं है अटेंशन से. बट आपका अदर फ्रेंड्स भी यही फील्ड में है अभी? नहीं. Are they sometimes they go for competitive exams and all? नहीं, सभी डॉक्टर्स और Doctors. पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन ऑफ्थल्मोलॉजी में नहीं. नहीं. आप जब MBBS MD होने के बाद गवर्नमेंट जॉब प्रेफर किए थे और यू वांटेड टू स्टार्ट योर ओन क्लिनिक? नहीं, मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब नहीं करना था मुझे. गवर्नमेंट जॉब क्या है, मतलब मेडिकल फील्ड के बारे में प्रैक्टिस कम, और बाकी जो मैनेजरियल चीज़ें रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मुझे कम पसंद थी पहले से. क्योंकि इंटर्नशिप में हमको क्या 6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो उस टाइम मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस आया. मतलब मुझे प्राइवेट में यू आर द बॉस ऑफ योरसेल्फ. बॉस है, अपन अपग्रेड कर सकते हैं, Yes, अपने को जो yes. चाहिए वो Freedom, कर yeah. सकते हैं. गवर्नमेंट सर्विस में वो नहीं कर सकते मैडम. Even we worked in controlled, but luckily in agriculture universities we don't have semi-controlled environment. Our innovative ideas are valued and we can submit research projects on that. Yes. आपके जैसे पर्सन्स बहुत कम मिलते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी वालों को, तो उनको आपका सुनना पड़ता है. मतलब थोड़ा फर्क पड़ता है. Innovative Whichever is ideas है. useful to the community, students and the university. क्योंकि आपका मिसेस क्या करते हैं? शी इज होम. Oh my God. फिर ये प्रैक्टिस शुरू किया था अभी का, कैसा है पेशेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स आई हेल्थ? अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई? मैं जब प्रैक्टिस शुरू किया था मैडम, उस टाइम इतना अवेयरनेस नहीं था जितना आज है, और लोगों का पेइंग कैपेसिटी भी थोड़ा कम था उस समय. तो मैक्सिमम लोग क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आई सर्जरीज कराते थे, और वो टाइम ऑफ्थल का इतना ये भी नहीं था, क्रेज भी नहीं था. ये लायंस क्लब, रोटरी क्लब वालों का मास वो ऑपरेशंस, चलता था. बिकॉज हम NSS में थे तब जाके हेल्प करते थे. और नॉर्मली क्या है, ऑफ्थल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो बहुत कम लोग ऑप्ट करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना सर्जरीज होता था, प्राइवेट वालों को उतना काम नहीं मिलता था. तो ऑफ्थल का बहुत कम लोग प्रेफर करते थे.
पहले मैं भी पीडियाट्रिक्स करना था मुझे, लेकिन वो नहीं मिला बोल के मैं ऑप्थेल में आया। तो थोड़ा शुरू में कम था, लेकिन अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ गया है अभी और पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ गया है, विजुअल नीड्स भी बढ़ गए हैं लोगों के। पहले कैसा जैसे चश्मा में मेरा कॉलेज में 12th तक कभी भी कोई स्टूडेंट को नहीं रहता था। अभी 10 स्टूडेंट्स में 5 स्टूडेंट्स को रहता है केजी से बच्चों को चश्मा कॉलेज डेज में, और छोटे बच्चों में। इसके दो रीजन है मैडम, एक तो क्या है अवेयरनेस बढ़ गया है और फैसिलिटीज बढ़ गई है। पहले आप बहुत ऐसे पेशेंट देखेंगे जिनको चश्मा था लेकिन उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी, कभी चेक नहीं किया, चाइल्ड भी कंप्लेंट नहीं करते थे, पेरेंट्स भी नहीं बट देखते। आपको ये भी लगता है डॉक्टर, इन जनरल प्रेगनेंसी केयर भी जो कुछ महिला है पहले टेंशन नहीं लेते थे, अच्छा खाते थे पीते थे विमेन, अभी कॉलेज स्टूडेंट्स में malnutrition is more. Do you think that is one of the contributing factor of prenatal history of a visual disorders में? आप कभी भी देखा है कि अभी मदर के साथ चाइल्ड आ जाते हैं, फिर मदर इज वेरी वीक। पेट्स का जो है मैडम चश्मे का नंबर लगना, ओके, दिस इज नॉट रिलेटेड विद दैट, ओके, ये अलग चीज़ है। इसमें क्या है कि थोड़ा विजुअल नीड्स जो है बच्चों से जो आंखों का स्ट्रेन बढ़ गया है बचपन से देखने का, वो एक मेन रीजन है। सो आप ये टीवी और ये सेल फोन को अटैच करते हैं? टीवी सेल फोन उससे बढ़ जाता है ना, यस यस, लेकिन प्री डिटरमाइंड है ये सब, उससे बढ़ जाता है लेकिन उससे नहीं लगता नंबर ऐसा। लेकिन प्रीनेटल हिस्ट्री का आप जो बोल रहे हैं ना, उससे कुछ डिसीजेस ऐसे हैं जो प्रीनेटल हिस्ट्री के रिलेट करते हैं, जैसे कुछ विटामिन डिफिशियंसीज है तो उससे आँख का ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, कुछ कंजेनिटल डिसऑर्डर्स हैं वो उससे भी रिलेटेड है, लेकिन चश्मे का नंबर इज नॉट रिलेटेड। बट ये कंजेनिटल डिसऑर्डर्स अब एक महीने में जनरली how many patients come, children, congenital disorders, what is the average percentage, or in a year, whoever is referred to your clinic? Yeah. In month actually we see 3 or 4 patients hardly. Previously when I started practice, that are more patients were there. Okay. अभी क्या हो गया है कि whenever child is born, that pediatrician is aware about that. Yes. So he will check और his eyes. अभी मेरे daughter in August only she delivered. Every 3 months they were checking for abnormalities like in other developed countries. Here also we do congenital anomaly scan Yes. at 5th month. So in that also you can find few diseases like anophthalmos. So that is done by the sonologist, radiologist, that we can the radiologist. But we can find. So you find that already treatment is done, prenatal history, that best prenatal care practices are leading to less congenital disorders? Less disorders, that is true. Any nice anecdotes if you remember? Cases I saw there, sometimes with the counseling also they improve, or after post-operative care. It's difficult to recall, लेकिन मुझे कुछ प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एक वन नाइट पेशेंट जो रहते हैं जिनका एक ही आँख रहता है और उनको सर्जरी कराना है, Blindness marriages, congenital disorders were more, especially deafness and blindness. Deafness, blindness, We found few anomalies, higher incidence. yes. Especially in Muslim community, बहुत ज़्यादा उनमें कंसेगनस मैरिजेस रहते हैं, तो हम काउंसिल करते हैं उनको। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोल के एक डिसीज है जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है पेशेंट को, देयर इज हाई इंसिडेंस बिकॉज ऑफ कंसेगनस मैरिजेस। सो वो अभी काफ़ी कम हो गया है, लोग अवेयर हो गए हैं, शादी के टाइम भी देखते हैं वो सब, और डॉक्टर्स भी काउंसिल करते हैं उनके लिए। So predominant is consanguineous marriage. Congenital disorders के लिए तो predominant. And prenatal history also. Prenatal history, yeah. That's true. And this incidences congenital disorders, you said because of this congenital disorders detection is done during prenatal period. Yeah. Congenital anomaly scan एक रहता है. Okay, anomalies. Anomaly scan. So in that many At diseases. what age group for the pregnancy का? 3rd month? 5th to 6th month.
around fifth month. Okay. Fifth Around fifth month, maximum organs they take their shape. month. So at that time you can Especially for eyes. detect eyes. Yes. And afterwards not Actually, required. nothing can be done even if we Yes, detect that. detect. Only thing, if patient is not having both eyes, ophthalmos or Yes. eyes are absent, growth is not there, Yeah. then parents can decide Yes, whether whether to continue. or not. That is Yes. their decision. Otherwise, mental readiness. Yeah. They are going to have If they are ready. special child. Many times, if first child is like that, so parents Yes, they it's will after discontinue, all. Yes. discontinue. Yes. Or if it is first child, they won't. Any special cases you were talking about? I was talking about one-eyed cases. Then another few things what I observe is that That one eye case I want to know. one-eyed, like those patients who are having one eye. So first thing, they are not ready to get operated Yes. until that cataract gets matured. Yeah. Because they have some fear, like if something goes wrong, what will happen? Yes. I will be blind. I am having at least some vision at present. After surgery, this also goes. Then Yes. what will happen? But when I operate that patient and when they can see clearly, तो उनका हैप्पीनेस, सम पेशेंट्स की आंखों में से पानी आता है, कुछ पेशेंट्स ऐसा मुंह पे से हाथ फिराते हैं, ऐसा Yes. वो एक बहुत अच्छा फीलिंग है. Yeah, especially sight is such an important thing to lead quality. हैंडीकैप हो जाता है ना मैडम, अगर Yes. कुछ विजन Dependency is more. डिपेंडेंसी मोर है. और थोड़ा फैमिलीज में, हर फैमिली में अच्छे बच्चे रहेंगे या केयर टेकर रहेंगे, Yes, yes. बोल नहीं सकते. अच्छा नहीं होने से भी one needs eyes. मेरा एमएससी में हमारे टीचर से क्वेश्चन पूछा था, deafness is a severe disability or blind. So in the whole class in second year MSc, all of us raised the hand for blindness is more serious than deafness. Then she said, all of you are wrong. She said, even though you are blind, if you can hear, you can lead better life compared to deafness. Because blind people, without seeing also, if somebody describes, you can understand. Even though you see, if you don't know about it, that's what the severity in leading life. What is your thing? That was it. Nowadays, this scenario has changed, madam. Actually, because of all these devices. No, without devices, without having devices, deafness and blindness. I feel blindness is more severe. Like We also felt, but she was explaining about. because madam, what happens? See, if somebody is blind, he cannot see even what he is eating. Like for daily routine work, Yes. he is handicapped. If he can see, at least he can manage all these things. If his son or like somebody is caretaking, then other things he can manage. Sons. And daughters, they will In do general, everything. sensitivity level for health issues, Yeah. even So women. for parents or especially for father, Uh-huh. daughters are very Opposite. Uh-huh. Daughters are more close to fathers. yeah. Sons are more close So to they will mama. be like that. And father will also do any odd thing for daughter. Yes. For some specs. Okay. समझो कोई father अपने Very लड़की को लेके interesting. आता है. Very interesting. This is like especially for the yeah. parents, who get so upset not having a son. It's a Phaco, wow. like in for cataract surgeries, phacoemulsification is most advanced technique nowadays. Because initially we used to do surgeries with knife and this. So incision was very large, and rehabilitation period for patients was around 40 days. So that was bit Okay. Because they have to be and- very careful. If post-operative care also is very difficult. If they Yeah. go anything they do wrong, vision that can get up. So with phaco, what we do, only 2 millimeter incision is there, and So 2 millimeter, and phaco probe is there, like pen. So that pen will go inside the eye, that will dissolve the cataract, and that will aspirate that cataract. And that So will- it sucks it. it sucks it. Initially, we used to remove that cataract as a toto.
So because of this 2 mm incision, in 4-5 days that incision will get healed and patient can go to work in 1 week. So that is very good for patients, and chances of complications are also very less. Infection. Yeah, infection, some other complications like Failure of surgery. failure of surgery like that. They are very less in this phaco surgery. This is most advanced technique. Now laser in phaco is also coming, but that is under researching. Where did you take the training for this? After finishing my MBBS, I went to Gulbarga, Karnataka. So there I did my PG, and after that in Miraj there is one good hospital, Lions NAB Hospital. So there 3 years fellowship was there for this cataract surgery. So after completing my PG, I went to Miraj, and for 3 years I That's was. why you have done super specialization. Like 3 years Yes. means nothing. Yeah, this was specially for phaco, for cataract surgery. Okay. So there I got lot of cases. In that 3 years period, I operated almost 3 to 3.5 thousand cases. 3 to? 3,500. So per day generally 1 or 2 will be there if patients are referred. No, actually we used to do 20-25 cases per day. We used to run a camp. Okay. And No, that is a camp time. Alone? today in practice. Huh? No, 4 or 5 cases per day. You do alone. Yeah. What type of stress you undergo during that operation? Initially it was like stressful because managing all things, staff was not good. So I trained my staff, I got new instruments, I managed my OT setup. So now it's okay. I don't have stress for surgeries. Okay. Approximately how much time it takes for preparation means for one patient? All my staff, they do all the preparations, Yes. like trolleys and all. Just these things. overall. It's 10 to 20 minutes for preparations, Yes. and for per surgery 20 minutes, hardly 20 minutes. Then that person will go to the Yeah, restroom. yeah. Because of this And the instrument, discharge is same day or after? same day, 4-5 hours. After 4-5 hours, we discharge the patient. Okay. Yes. Surgery has become very easy now for patients also, and for doctors also, because of new advanced machineries and all these things. This incidence of cataract also is increasing. Is it increasing? Incidence is also increasing and age is decreasing. Age of cataract. Onset of Previously- cataract is Uh-huh. at a younger age. Previously, after 60 only we used to see Yeah, cataracts. that's Normally what. up to Old 60. people only. Uh-huh. In the villages, very old, like Very above old. 70, 80 Yeah. years. Many Who used many to patients sit, in villages walk. at the age of 80 also they can read without specs. Yes. So. In villages. But nowadays the age of cataract is going down. Mhm. So many times I see 40 years of patients age is of having 40. cataract. 35 years. What might be the reason? Any research? Not exactly, but diseases like diabetes, hypertension, Okay. thyroid, they have increased, madam. Yes, that is increased. So that is also there. And dietary habits. Dietary habits are changed. Okay, that also affects. That also affects. Vitamin deficiencies, Okay. all other things which we should eat. Yes. They are not eating. Vitamin A and D they used to talk about Yes, for yes. eye health more. And exposure to sunlight. Okay. Sunlight exposure is also Okay, if they don't positive have reason. vitamin D, yeah, deficiency, correct. And we used to walk to Jilla Parishad schools till 12th standard. No, not even bicycle we used to use. Yes, yes, Exposure to sun, when you are saying, yes. that is why you were hale and healthy and physically fit also those days. मैं मेरे स्कूल टाइम का जब याद करता हूँ Uh-huh. तो आज के बच्चों का और हमारे में काफी डिफरेंस है मैम। Yes. जैसे काफी में जमीन स्कूल आसमान टाइम में होता हम था। लोग स्कूल में से जब आते थे तो पिताजी का किराना शॉप था तो वहाँ हम जाके बैठ Yes, जाते yes. थे। Even- यूज्ड टू हेल्प आवर फादर वैसा। और ऐसा कोई क्लासेस है, कुछ Coaching फाउंडेशन classes है, है, ट्यूशन बिल्कुल है, नहीं। गाइड है, ऐसा कुछ नहीं था। Yes, पर्सनल yes. ट्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक था। और दूसरा हम जब गांव में पेरेंट्स के साथ कहीं जाते थे तो वो भी एक सोशल टच हमको मिलता था। Yes. आजकल बच्चों को टाइम नहीं है मैडम। Yes. अगर हम लोग कहीं जाते हैं वो siblings के साथ भी interaction है नहीं होता है वो। because both are having separate coaching classes
hobby classes, और उसकी outside. वजह से क्या है, कुछ चीज़ें जो है जैसा So many things are happening. Bad is happening. सोशल टच नहीं रह रहा है बच्चों Yes, को, yes. स्पिरिचुअल टच नहीं रह रहा है। Yes. पहले गांव में And कुछ more, above all that, experiential learning is not there. मैं बहुत बार बोलता हूँ, एक जैसा हम बोलते हैं व्यवहार ज्ञान जो बोलते हैं, Yes, practical knowledge. प्रैक्टिकल नॉलेज, That is only experiential learning. Everything we used to do and learn. Now they मैं जब learn. शॉप में बैठता था कोला में, तो उन लोगों के साथ बात करना, Yes. प्रैक्टिकल थिंग्स, They also give feedback about us to the parents. यस, कि अच्छा बात किया तुम्हारा लड़का लड़की. कैलकुलेशन Even yes. तो मुझे आज प्रैक्टिस में बहुत काम आता है। Yes. अब कोई Even I patients- had. Yeah. हाँ, पेशेंट्स अगर कोई मेरे पास आता है और मैं उसके साथ अच्छी बात करता हूँ, तो वो बोलता है इट्स रूटीन फॉर मी, मेरे लिए तो रूटीन है, मैं सबके Yes. साथ अच्छी बात करता हूँ, लेकिन पेशेंट बोलते हैं मुझे डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा बात करते हैं। बाकी सब नहीं मैं करते. वो They डॉक्टर- don't devote that much time. हाँ, मैं वो डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझे बोला, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या, वापस से बार बार पूछ रहे। Because in the shop you learn, customer is God. यस, Here also customer only, clients, मुझे patients are. रूटीन है वो मेरे लिए, लेकिन पेशेंट Yeah, अप्रिशिएट I do करते हैं। agree with you. I used to sit here to assist my father in the medical stores. अच्छा, So that is why my English improved, spellings improved, and mathematics, billing. यस यस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. क्योंकि आजकल बच्चों को वो भी नहीं आता है मैडम, दे यूज कैलकुलेटर्स फॉर एवरी स्मॉल एंड Yes, yes. कैलकुलेशंस, वो भी है। और बाहर जब हम जाते थे गांव में, जैसे कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, उसमें एक अलग सब लोग मिलना, Yes. कोई छोटा काम उनको ये करते Dignity of labor रहता था, अभी बच्चों को कम लगता है. That is why always I tell the children that whatever your parents are doing, you should not hesitate to do that. The dignity of labor also is reducing. I do not know. Drastically it is reducing. पेरेंट्स को भी लगता है बच्चे पढ़ना दूसरा काम नहीं करने से भी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे. वो एक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है। Yes. अभी हम लोगों का एक ग्रुप है मैडम, वृक्षवल्ली ग्रुप बोल के, Uh-huh. उसमें हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। तो उसमें मैं देखता हूँ, तो हम जब काम करते हैं, जैसा गड्ढा बनाना है, पेड़ ले जाना है, प्यार से लाना पड़ता है, वो मैकेनिकल करने से वो प्लांट नहीं रहता वो. तो वो लोग हम जब करते हैं तो बहुत बच्चे देखते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हुए आते हैं, बट दे डोंट कम एंड हेल्प अस। Help. मतलब उनको वो ठीक नहीं डॉक्टर लगता है। आके कर रहे हम लोग क्यों नहीं करना, बिकॉज उनको जरूरत है, यंग जनरेशन को आगे हाँ, जरूरत तो है. उनको वो मट्टी से ये Yes. करना, वो गंदा हाथ होता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है वो। किधर डालते हैं रोड साइड और you have in cover? Our group is around 300 members, so we search for open places, Okay. मंदिर, temples है, That is best. वो करते हैं। कुछ प्लॉटिंग है जिसका, जहाँ पे उनको लगाना है वहाँ जाते हैं। Mhm. रोड साइड भी लगाते हैं। रोड साइड थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है Expansion of roads, yes. उसमें कट 50 years 60 years old trees they are cutting. So every advancement in any area also Yeah, very bad. problems raise करते हैं. What are your hobbies apart from this tree plantation? My hobbies, सोशल वर्क एक मेरी हॉबी है, दूसरा मुझे म्यूजिक सीखना है, बट आई एम नॉट एबल टू डू दैट लास्ट मेनी इयर्स। कोविड में सीखा मैंने कैसियो 2-3 सॉन्ग्स. अच्छा। मेरा इच्छा था, लाइक बकेट लिस्ट बोलते हैं ना, हाँ। मरने के पहले कम से कम एक गाना, एक म्यूजिकल अच्छा। इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, बिकॉज मेजॉरिटी साउथ इंडियंस दे आर वेरी गुड एट फाइन आर्ट्स. Yes. हमारा डैडी he never gave us time to pursue Yes. our hobbies, because he used to tell, come and help in the factory, Yes. come and help in the shop, like that. Girls and boys all used to help. वो ज़्यादा बेनिफिशियल था। Yes. मैं भी वो फील करता हूँ। Yes. हॉबीज तो ठीक है, अपन Yes, वो yes. परसू कर सकते हैं बाद में, But लेकिन एक पेरेंट्स अच्छा इंसान भी बनाया, बिकॉज बहुत पेशेंट्स को देखते थे कितना बीमार से आ जाते हैं, कभी कभी पैसा नहीं रहता, फिर शॉप में बोल देते लेके जाओ. मुझे क्या लगता है, Empathy. पेरेंट्स के साथ जब रहते ना हम, Yes. तो कुछ काम भी नहीं रहा, इवन वी सिट एंड Discussion also, Discussion करते. many things. तो बहुत Daddy सारी also चीजें used to tell हमको about सीखने को his मिली. Yes. childhood, all Yes. that. कैसे रहना है, कोई आया तो अभी उसको ये एज respect- में ध्यान में आ जाता, वो बचपन का वो इंटरेक्शन, that time we never realized it had a strong influence on our personality,
our value system. Yes. Lot of similarities are there. Because both of you are from Maharashtra rural area, I'm from Andhra Pradesh rural area. So in India, rural setup is almost same, except ये language. जो जनरेशन है मैडम, हमारा आपका एज कितना है? 65. 65 है, आई एम अराउंड 50. ये जो अपना जनरेशन है, Yes. ये सभी जनरेशन के लोगों का सेम ऑलमोस्ट सेम स्टोरी Yes, yes. रहता है. लास्ट 10 years से ज़्यादा है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से ड्रास्टिक चेंजेस. एक तो एजुकेशन में कंपटीशन इतना बढ़ गया है मैडम, Yes. उससे बच्चों का लाइफ बहुत हेक्टिक Yeah. हो गया है. पेरेंट्स का भी इनसिक्योर हो जाता है इफ दे डोंट गो फॉर कोचिंग क्लासेस. हाउ डू दे कम्पीट विद द इसमें बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है. डिफरेंट. जैसा बच्चों को भी अगर वो नहीं कम्पीट करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे, Yes, तो उनको yes. भी आगे थोड़ा डिफिकल्ट है. और ये नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो फिर स्पोर्ट्स है, बाकी एक्टिविटीज है, पेरेंट्स उसमें नहीं है, वो सबको नहीं नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता. स्पोर्ट्स में उनको थोड़ा बैलेंस करना डिफिकल्ट है. what are the other trends you're finding like cataract? You said onset of cataract is at lower age में आ गया. चिल्ड्रन में क्या? एक तो ये स्पेक्ट्स जो मतलब फ्रीक्वेंसी जो है उसका वो बहुत बढ़ गया है. लॉन्ग साइटेड, शॉर्ट साइटेड इन जनरल. शॉर्ट साइटेडनेस का ज़्यादा नहीं हो गया है. Short sightedness means Myopics. they don't see the things which are far off. Yes. मायोपिया जो बोलते हैं हम, इसमें माइनस आता है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वही रहता है प्रॉब्लम. और दूसरा एक जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, बिकॉज ऑफ दैट दे आर मेनी पेशेंट्स आर हैविंग ड्राइनेस. Like in 1 minute we have to blink our eyes 20 to 25 times at least. So when we work on screen, that blinking is reduced. So we are continuous staring. So that tear layer is disturbed and they are having dryness. So you can see many students or many children, they frequently blink their eyes like that. Yeah, nowadays. While Frequently- talking also. They frequently do like that. When they will remove specs, they will do like that. Yeah. And So always this is associated with the screen. Yeah, this is because of dryness. Means the water content in tears is reduced. Yes. Okay. That correct only. Whoever even my observation also, children who use excessively their cell phones, Yes, yes. they have this issue. Yes. So they will feel थक गए हैं जल्दी, बहुत थकान आ गई है. They will rub their eyes and all these things. This is vicious cycle. तो बढ़ते जाता है बच्चों में स्क्रीन So what do you advise? They have to use because sometimes 50% of their academic work they have to use cell phones. So you say what is your advice is as an ophthalmologist? If They have to give the break and you can do that after every 20 minutes, you can half have an some hour break, at least. at least 1 minute Yeah, they break. can recall and make the notes like that. Even they can close eyes for few seconds. And what they type can look of at distance. yeah, and what type of treatment they can give? Some Treatment is like They can put, artificial tears, no. drops. If any wet cloth they can put or cotton. That is also helpful. Helpful. Even gulab gel if Okay. you are at home. और artificial tears. So गुलाब जल में कॉटन रख के थोड़ा ठंडा वाला और just like that. नहीं, it's plain Which वाला one? भी use कर सकते हैं. But which one is best practices? गुलाब Cold जल. cotton? No. हाँ, फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा होने के बाद. cold cotton is better Okay. because that will give better relief. और artificial tears जो बोल रहा हूँ मैं, Okay. they are very useful for this. But it does not long term impact. It does No, they are preservative free. उसमें जो अच्छे drops आते हैं, Okay. उसमें कोई preservative नहीं रहता है. तो they are good for this. Mhm. Main thing is जब भी उनको थोड़ा judiciously अगर use करते हैं screen, अब जैसा उनका कोई क्लास है, वो होने के बाद they will go on YouTube, they will search on Google. So continue, वो चालू रहता है. Nowadays that shorts आ गया. Even at this age, my daughter was telling you can see those some interesting things. But unnecessary things are many. Out of 40, 50 shorts, one may be related to my subject or something. Yes. But that takes nearly 1 hour. And then I think, what about the children at this age? I But that is can't very resist. lucrative. Like मैं भी Yeah. कभी-कभी देखता हूँ ना, Yeah. तो
Sometimes Hundred- it goes 100 1 hour, shots. especially time. Uh, 1 hour, how? My goodness, then I said, this is bad. Yeah. Switch off and get up. I also feel that. Yes. Temptation. So whenever possible, you should give break and use judiciously. Screen time should be reduced. Judicious use of all these gadgets, that will help. Do you advise any food, maybe कुछ खाने से ऐसा नहीं, all greens and नहीं, even if you avoid junk greens food, and fruits. especially vitamin A containing fruits, Okay. they are helpful for eyes. But normally, what we eat daily in good families, that is sufficient. Okay. That will not cause any harm like ऐसा. लेकिन जिनको प्रॉब्लम है ज़्यादा, those who are suffering from dry eye or like this vitamin A deficiency, they can have that, especially beet, gajar, tomato, like that. Do you find sometimes, as a professor in the university, sometimes some girls and boys, they think specs wear करने से एक genius look आ जाता है. Yeah. So they don't have any eye disorder. They pretend and Many- come. many- Is it really? Many children come to us Uh-huh. and they will say that I'm not reading that line. Uh, They won't expect actually. So They at first they instance, say, I can't read, I can't read. first instance, we understand that this guy wants to get pets. He's pretending. Yes, so we call it as malingering. Malingering. He can see, but he's saying that. How do you guess them? How do you understand that? No, what we do, there are some tricks. Like we will put 0 number glass in front of his eye. 0. Plain glass. That will cause nothing effect. And he will read immediately that line. So, Okay, like a placebo effect. Yes, placebo effect. He will close one eye and without any glass, I will ask to read it. He will not know, or he will read some wrong letters I like got that. And then I will put 0 number glass. That won't have any effect. But as soon as he see that I am putting glass, he immediately read that glass. Many these marketing gimmicks are there. Yeah. So they are saying that use blue cut lenses. So by blocking blue light, blue cut glasses आते हैं ना, उसमें क्या होता है कि that glass will block the blue rays. Blue rays. So that company people what they are saying that blue light from computer is damaging your eyes. So you use blue cut glasses. They Yeah. are very expensive, but that is very wrong. Blue light is essential for maintaining our sleep cycle. So our sleep cycle is maintained by blue light. Sunlight is having blue light. So whenever blue light is there, we are little bit aware, like alert. At evening that blue light is gone. So it is sleep time. So that blue light is essential for maintaining our sleep cycle. If you cut that blue light even in daytime, your cycle is disturbed. That is harmful for your sleep cycle. Okay, you are talking about wrong practices. So you should not use blue glasses, blue cut glasses. What are the other things you find because of this social media? Especially in youngsters, these blue cut rays, blue cut glasses, expensive frames, and Okay, that you talk about. Expensive frames. they are buying expensive frames. And even if you don't have number, these marketing people, company people, they are saying that you use specs for computer work. There is no need for specs for computer work. Suppose if you don't have any number, you can see clearly. There is no need to wear glasses. But many students, they are wearing just plain glasses Plain glasses. for computer work. That is serious. Not really. If you are having some problem like with bright light, because of bright light your eyes are getting pain, then you can use that. Yeah. But each and everybody need not to use that. And the students who have these disorders, how frequently they have to go and consult doctors? They have specs already, they're using? Normally, up to age of 24, 23 to 24, this number goes on increasing. So in that period, up to age of 24, every yearly you should have checkup. Yearly checkup. Yearly is working. Once your number gets stabilized, after that you can go every 2 yearly Okay. to doctor. That is enough. ओल्डन डेज में जब तक वो टूटता नहीं था, Yes. टूटने के बाद भी उसको डोरी लगा के बेचारा ओल्ड पेशेंट्स वैसा करते थे, लेकिन यंगर अभी क्या है, अभी कोई बहुत फ्रेंड का ही ट्रेड पेरेंट्स हो का गया, वो एडिशनल एक्सपेंडिचर हो गया. बहुत बड़ा ये है.
आप अभी एक्सपेंसिव फ्रेम्स बताने से मुझको कबीर का दोहे रहते थे 6th स्टैंडर्ड में, उसमें बोलते हैं आप नाइफ खरीद करने के लिए जाते, पेन खरीद करने के लिए जाते, वो नाइफ कितना शार्प है वो देखो, नाइफ का वो कवर कितना उसका गोल्डन है क्या, डायमंड्स है क्या, कवर का कुछ कीमत नहीं है। लाइक पेन का रिफिल अच्छा चलता है क्या, पेन का शो ऑफ का जरूरत नहीं है। सो नाउ यू आर टेलिंग अबाउट द ग्लासेस आर मोर इम्पोर्टेंट, बट नाउ दे आर गोइंग फॉर द फ्रेम्स। ट्रू। So the purpose is somewhere they are deviating from the purpose. नहीं, हर फील्ड में वैसा हो गया मैडम। जैसा स्पेक्ट्स का है तो बाकी फील्ड्स में भी आप देखेंगे, समझो न्यूट्रिशन का फील्ड आप देखेंगे, तो न्यूट्रिशन के फील्ड में तो फूड का पागल हो गए पेरेंट्स, लिटरली पागल हो गए। अभी मिलेट्स का फैशन आ गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर प्रमोटिंग मिलेट्स, दैट इज गुड, मिलेट्स इज गुड। नो नो नो, अब भी आ गए फैशन, नहीं तो पहले अब जैसे ज्वार खाते when we were children मिलेट्स बहुत खाते थे। आज भी ज्वारी खाते हैं हम लोग, वो भी मिलेट ही है। भगर खाते हैं उपवास के लिए, दैट इज आल्सो मिलेट। राजगिरा, दैट इज आल्सो मिलेट, बहुत खाते, ये सब खाते हैं। लेकिन any other thing you want to advise to the especially your college students with regard to eye care when they go on two-wheelers in general, goggles डालते हैं, बहुत बच्चे यूज करते हैं, so dust particles आ जाते हैं। So what do you advise after going home they have to splash water on their face? बाहर जाते समय गॉगल यूज करना एक बहुत अच्छी आदत है, करना ही चाहिए। गॉगल यूज करना चाहिए, गॉगल यूज करना बेटर है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स है, कभी ट्रॉमा भी हो सकता है। Correct. वो भी है। और मुझे तो हमेशा लगता है कि पेरेंट्स शुड बी मोर अवेयर अबाउट दिस। जैसे छोटे बच्चों के हाथ में शार्प ऑब्जेक्ट दे देते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे जो मतलब हाइपर एक्टिव रहते हैं, बच्चे एग्रेसिव बच्चे, दे विल रिमूव दैट पेन, बहुत ही पेन का ढक्कन निकालते हैं, घर में खेलते रहते हैं। ऐसा पेशेंट्स ईयरली कितना आ जाता है डॉक्टर, ये खेलते खेलते डैमेज किया आई को? अभी बहुत कम हो गया है, लेकिन स्पेशली इन दिवाली सीजन क्रैकर इंजरीज, हमारा टाइम में भी बर्न का इधर बर्न होता था, स्पेशली बॉयज का दे हैड वुंड्स। क्रैकर इंजरीज का अभी भी काफी इंसिडेंस है, पहले से कम हो गया है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा अवेयर हो गए पेशेंट्स। लेकिन पेरेंट्स ने अगर थोड़ा गाइड करना पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट इज बर्स्टिंग दे शुड बी अवे, बट उनका करेज एडवेंचर इज कितना क्लोज होने से उतना एडवेंचरस। तो सही के बारे में इन जनरल आप हेल्थ का ध्यान रखते हैं मैडम, तो आंखों का भी सेहत अच्छा रहेगा। जैसे आप जनरल हेल्थ अच्छा रखेंगे, विटामिन डिफिशिएंसीज नहीं रहेंगे, तो जैसे एक्सरसाइज करेंगे जनरल हेल्थ के लिए, तो आंखों का हेल्थ भी इम्प्रूव होता है उसमें। मैं तो इन जनरल ऐसे ही कहूँगा कि हेल्थ के बारे में, जनरल हेल्थ के बारे में एवरीबॉडी शुड टेक केयर। वन मोर, व्हेन यू सेड सन, नाउअडेज चिल्ड्रंस क्लब आ जाते हैं बच्चे खेलने के लिए, व्हेन आई लुक एट द सनलाइट, ऐसे कुछ हम लोग टेरेस में जाने के बाद आई लुक एट दिस एज आल्सो, आई लुक एट द सन, इवनिंग सन, बट जैसे विशाल मैडम हमें पाहू शकत नाही, the sunlight that is they immediately close, that is because of dryness madam. Okay, dryness जो स्क्रीन टाइम बढ़ने से मैं बता रहा हूँ आपको, ड्राइनेस, तो ड्राइनेस ये सब बच्चे टीवी ज्यादा देखने वाला है, दिन भर लगा के वाला, सो उससे भी फोटोफोबिया होता है, लाइट से तकलीफ, फोटोफोबिया, तो that is also because of increased screen time, dryness. Yes, what advice would you like to give to the young professionals in ophthalmology? अभी इसमें कैसा है मैडम, देखो everybody knows everything, yes, but it's difficult to follow. जैसा that's only patients in every field we have information. Yes, अभी जैसा सब लोग बोलते हैं कि पेशेंट के साथ चीट नहीं करना चाहिए, सब लोगों के साथ अच्छा रहना चाहिए, but many people are not following. Everybody knows this. रूटीनली मैं मेरे प्रिंसिपल्स में मैं क्या करता हूँ, कोई भी पेशेंट्स को चीट नहीं करना है मुझे, मतलब वो पेशेंट मेरे से गया, डॉक्टर के पास गया, तो जो सही बात है, व्हाट इज ट्रू दैट आई विल टेल हिम, वो मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ। कभी कभी इसमें मेरा लॉस भी होता है, लेकिन जो सही बात है वो हमेशा मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पेशेंट जब मेरे क्लिनिक से बाहर जाता है, ही शुड बी हैप्पी। एनीथिंग लाइक ट्रीटमेंट के बारे में, कभी मॉनिटरी कुछ प्रॉब्लम रहता है, सो ही विल आस्क फॉर कंसेशन ऑन दिस थिंग्स, I will try to give maximum, like he should be happy,
at the end of like living my So journey. ethical values and वो हमेशा करता हूँ. कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं हॉस्पिटल में, जैसे सर्जरी के टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. बेस्ट ऑफ बेस्ट हैंड्स, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में होता है ऐसा. सो मेनी डॉक्टर्स व्हाट दे डू, दे विल हाइड देयर थिंग्स फ्रॉम पेशेंट. दे विल टेल समथिंग एल्स एंड दे विल टेल यू गो टू दैट डॉक्टर लाइक दैट. मैं कभी भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो पेशेंट को क्लियरली बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा होता है बहुत सारे पेशेंट्स में. yes. लेकिन इसको हम अच्छा करेंगे, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ खर्चा आएगा, कुछ मैं बियर करूँगा, कुछ आप लोग बियर करूँगा. सो पेशेंट थोड़ा सेटल हो जाता है. अगर हम उसको कुछ गलत बोलेंगे, डरा देते हैं, तो वो और 2-3 डॉक्टर्स के पास जाता है, वो कुछ अलग बोलते हैं, ही विल डिस्टर्ब. तो मैं हमेशा जो प्रॉब्लम आता है, एवरीथिंग आई विल टेल क्लियरली पेशेंट्स कि भाई In ऐसा every field, as a teachers also, students का potential, उसका positives, negatives, बहुत बार टीचर्स में भी negatives बताते नहीं हैं, फिर बाद में जाके बच्चों को ही नुकसान हो जाता है when they don't know. About Parbhani or even in Andhra Pradesh also, after the eye operation, everybody will be asking, Adi kaisa hoto, how you used to feel now after the operation. But there are few cases I hear, very rarely, but after the operation also there is no improvement. There are many reasons, madam, Yeah. actually. Only cataract removal is not sufficient. Many Yeah. times patient will have some diabetes complications. Yes. Some patients will have congenital Yeah, these are all I'm talking about very old, pretty old. Yes, yes. So what might be the reason? Retina problems, age-related. Okay, other eye parts. Other eye parts are abnormal. So many times what happens when cataracts get mature, cataract जब mature हो जाता है, पूरा पक जाता है. Yes. That time we are not able to see the retina or other parts of eye because of that white cataract. Yes. So, Okay. so after removing cataract, we will come to know that Yes, the other retina is there are defective. other things. And patient will not understand this. Yes. He will naturally. say, previously I used to not see, and Now also I can't see. you operated my eye. So why didn't you tell me before Yeah. surgery? Retina replacement, artificial retinas are available? No. Retinal diseases, optic nerve diseases, they are having no treatment. So, do you feel that all the people should make a vote, take a vote that after they die they have to donate the eyes? Is it a good practice? Is it beneficial? And this especially when I was a principal, we used to have government circulars, whole body donation, eye donation. We used to take Obviously, vote. eye donation is very good. But there what are is the few- care? How many hours में देना पड़ता है? After death, within 6 hours, you can remove eyes. Okay. Few things the relatives should take care, like the eyes should be wet. You should close the eyes properly, and you should put some wet cloth on that eyes. So 6 hours you can wait. But few misbeliefs are there. When we remove the eye, only cornea, that transparent part, that is only useful after removing eye in eye donation. Retina, other part, they are not useful. So after removing that eye from that body, we cut that cornea, we preserve that cornea, and that is only useful. Suppose patient is having some retinal problem or some congenital anomaly, that eye replacement will not be helpful. Yeah, that should be healthy eye. That should be healthy eye, and So, if he is having because of trauma. After the person's death, whether they can see whether it is good for donation or not good for donation, the eye status. Yes. After Even the, with torchlight. after the death also. For torchlight, with torchlight also we can see, because only cornea part, that transparent part, that is only useful. So if that is good. So the doctors can tell, frankly, that Yes. even though you had made a vote, it is not good. Yes. Means it cannot But be. normally what we do, we don't tell anything to relatives, because they will get upset. If we tell them that these eyes are not useful and we are not going to take this, they will be upset. But even if for surgery they are not useful, for saving eyes, suppose if patient is having Okay, trauma. this eye donation, private doctors also come. If somebody is having eye bag, right, doctor will also do, provided he is Do we having eye have bag. in company eye bag? No, in Palwal we don't. So government doctors come and they remove that eye and they send to Jalna, Ganpati Netralaya. Okay. Like,
So they can preserve it for Yes. many days also Huh. here in Barbari. No, in Parvani. From Parvani, we have to send to Ganpati Within Netralaya 6 hours only. within 6 hours. Within 6 hours, we have to remove that eye. And within Then 24 hours, we have to send to Ganpati 24, Netralaya. one day. They will remove that cornea button. That can be preserved up to 15 to 20 days. Again, that should be used faster. There are many patients waiting list है हमारे पास, मतलब जिनको कॉर्निया की जरूरत है. Millions of people waiting list में है. हमारे इधर ट्रेंड नहीं है मैडम. In many countries like in Sri Lanka, it's compulsory. Compulsory eye donation. But now the number is increasing. People eye donation. Recently in our family also, few deaths were there. All gave. What I feel, it should be made compulsory. Okay, Because that is useful corneas are younger corneas. Young patients के जो corneas है, that is more useful. वो ज़्यादा दिन काम करते हैं जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं. accidents and all that. एक्सीडेंट्स है, हॉस्पिटल डेथ्स है, तो वो पेशेंट्स का कंपलसरी अगर आई डोनेशन करते हैं तो दैट विल बी मोर यूजफुल. एट प्रेजेंट वी आर इंपोर्टिंग कॉर्नियास फ्रॉम श्रीलंका. श्रीलंका से हम इंपोर्ट करते हैं, पैसे दे के हम इंपोर्ट करते हैं. बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे कंपलसरी है. Actually, this then RTOs, road accidents, they should make it compulsory. All. वैसा अगर रूल बनाते हैं तो some false practices in some religions, they do not donate eyes. Few religions. Recently, some YouTube में भी बार आ रहा था. If you donate eye, put आगे जन्म में आपको eyes नहीं रहेगा. What? How stupidity. Next life you will be blind. ऐसे कुछ practices है, उसकी वजह से few religions they do not donate eyes. ऐसा बहुत काफी सारे problems है इसमें. In general, is there big scope for ophthalmology next generation if the students want to opt for ophthalmology? Definitely, definitely, because ophthalmology is a growing branch, and another thing it is advancing branch. इसमें बहुत advancements आए हैं, and visual needs patients के बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं. Visual problems and needs. लोगों का पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ गया है अगर हम ऐसा प्रोफेशनली सोचे तो. So they are paying for like previously for cataract surgeries 5,000-6,000 patients will say, oh, it's very high. At present they are paying 1 lakh for one surgery. इतना भी लोगों का कैपेसिटी बढ़ गया है. Because of the advanced टेक्निक से लोगों का थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है. And safe also, no? You said recovery is within days only. Now 40 days they need not. There are many angles like we don't have emergency patients. थोड़ा cool practice रहता है. After 6 o'clock, if I close my OPD, nothing to worry. For medicine people, for gynec people, 24 hours they have to get their toe. Like Yes, emergency. For all these reasons, ophthalmology is very good branch. They can devote time for the family. Yes. It's good branch. Thank you so much, doctor. Really enjoyed. I Thank got you. enlightened, and I'm very sure the audience also will like this. Thank you episode. very much. Thank you so much for devoting time for this. Thank you. Thank you.